Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We'll start with the derivatives and technical outlook for today. So, speaking of yesterday's session, we saw that yesterday on the second consecutive day, Nifty gave a positive closing in spite of a gap down opening. So, somewhere there was a bounce back. Currently, if we see Nifty is trading within the range of 19,300 to 19,650 levels. A decisive move can be expected once Nifty breaks out of this range. Speaking of the futures data, Nifty futures yesterday saw a long build up to the tune of 1.98%. In terms of OI, the decline was of 5,047 contracts. PCR rose from 0.99 to 1.11. If we talk about the options data, 19,600 and 19,500, where the strikes where heavy call writing was witnessed, which somewhere indicates a resistance, while put writing can be seen at 19,300 strike, indicating a support. Bank Nifty 2 is currently showing sell on rise structure. 45,000 can be considered as a resistance, while support can be expected at 43,500. Speaking of today's weekly expiry perspective, 44,000 yesterday acted as a resistance for Bank Nifty. So 44,000 should be a level to watch out for from an intraday perspective today. If at all Bank Nifty manages to break above 44,000, then an intraday short covering is expected in Bank Nifty. Speaking of the futures data, Bank Nifty futures witnessed a short build-up yesterday to the tune of 4.08% and an addition on the OI side of 6,093 contracts. PCR rose from 0.79 to 0.84. On the options front, again 44,500 strike saw call writing additions indicating a resistance, while put buying has been seen at 44,000 strike, which indicates a bearish bias for today. Speaking of some stocks and sectors, yesterday almost all the sectors closed on a positive note and gave an indication of a bounce back, except the metal stocks, where once again a selling pressure was witnessed. Speaking of today, some stocks to watch out for would be Escorts, Ultratech Cement, Varun Beverages, and OFSS. Coming to the FI and DI data, in yesterday's cash market, FII is bought worth rupees 722.76 crores, while DII is bought worth rupees 2,406.19 crores. Speaking of the futures data, long build-up can be seen in some stocks like OFSS, Escorts, and Infosys, while some stocks where short build-up can be seen are Indigo, Hind Copper, that is Hindustan Copper, and Crompton. So this was all from mine. Now I'll hand it over to Archana ma'am for further updates. Thank you, Shantanu. Good morning, teams. A few updates from my side, starting with railway industry. The cabinet has approved 32,500 crore for 7 projects in railway sector. This brings opportunity for companies like RVNL, IRCON, RITES, etc. Overall, the positive news for the sector, and the focus of these projects is to propel the Indian Railways into a new era of efficiency and the capacity expansion. So overall, this bodes well for the industry, and we keep the positive outlook of the companies I said before. On Aurobindo Pharma, the pharma company is set to launch an HIV triple combination product for the children living in the HIV in low and middle income countries under the voluntary license from Viv Healthcare. So this bodes as a positive development of the company's front. On CIPLA, the Office of the Joint Commissioner, Food and Drug Administration, has issued an order for the suspension of FDA license to company's manufacturing unit at Patalganga Unit 2 for 10 days in December 2023 for non-conformance of good manufacturing practices. This has no material impact on the financials, operations, or other activities of the company due to the said order. However, due to this negative news, the stock could be under pressure today. On Power Grid, the company's assets under Northeastern Region Strengthening Scheme 6 has received the notification for commercial operation August 16. On Lupin, the drug maker announced the launch of JEET, its patient support program dedicated to heart health. It also launched the tritium dry powder for inhaler for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease in US. And lastly, on Indian banking sector, the Fitch rating has come with a report on Indian banking stating that the Indian banks are on strong growth trajectory.
following the pandemic challenges and highlighted that the Indian banks have strengthened their capital reserves and cleaned up their balance sheets. Further, Fitch has said that due to the strengthening of capital buffers, the sector's average common equity tier 1 capital ratio has increased from 10.4% at the end of fiscal 2018 to 13.4 at the end of fiscal 2023. And it expects the bank's earnings will likely remain healthy. We believe this is a positive for the sector, and our top picks remains HDFC Bank, ICICI Bank, and City Union Bank. So that's it from my side. Now hand it over to Hitendra for further research updates. Thank you now to Hitendra. Thank you, and continue with further updates, starting with VIP Industries. The VIP Industries announced that the appointment of Neetu Kashmirkar as the company's managing director, effective from August 15, following the resignation of Anandya Datta. Kashmirkar will continue as the CFO while additionally taking over the responsibility of the managing director designated till November 13. Post November 14, she will be maintained as the managing director and CFO for the shareholders' approval. Secondly, Nazara Technologies said that the gaming and sports media platform has invested USD 5 lakh dollars, that is 4.15 crore, in an Israeli-based game firm, that is Snacks Game. This investment was made by its wholly owned Singapore subsidiary Nazara PT, and as a part of investment, Nazara has acquired rights to publish Snacks Game in India and the Middle East on the revenue sharing basis for the next 5 years. For the Interglobe Aviation, if you see, Indigo's co-founder Rakesh Gangwal's wife Shobha Gangwal has sold the entire 11.5 million of a share, that is 3% stake in Interglobe, for 2801 crore. The Rakesh Gangwal and his family is also planning to sell around more 4% in the Interglobe Aviation, planning to up to $450 million, adding a deal term sheet. Coal India said that it has reported an 8.5% rise in capex for the expenditure for the first 4 months in the current fiscal 25-24 for the 4,700 crore. The capex situation during the period under review was nearly 100% of the progressive target of 4.54 crore and 28.3% of the annual goal of 16,600 crore. If you see in the April to July, the capex is built on high base of 4,332 crore, which is corresponding to the FY23's capex of 18,619 crore. That's it from mine, and hand over to Prabhakar sir for more updates. Good morning, team. Yesterday, Dabar family, Burman family group has picked up 7.5% stake in Religar Enterprises. Now they already had 14% stake. With this 7.5, the stake becomes 21.5%. So no, this is investment which they have done, is what I can understand. Defense company GRSC, the management commented that order book as on 30th June 2023 was 24,456 crore, and company executed almost 750 crores in Q1 FY24. Management is expecting 3 more projects from Indian Coast Guard. So 4,000 crore order in next few months they will get. So they expect even after the execution, the order book will be stable at 24,000. So that is very positive for GRSC. And even Musgon Dog has bidded for one project in Europe. That is something positive. So all this defense related shipping stock yesterday was on Zoom. GRSC, Musgon Dog, Cochin Shipyard. I think that move might continue today also. If US Fed meeting, July meeting update has come. So there most officials still see inflation risk potential and need for higher interest rate. So that is slightly negative. And even the Chinese problem is also increasing. Aerospace major Boeing starts production of Indian Army's Apache chopper. Now it will, Tatas are in tie-up. It is in Hyderabad. So that plant, the production has started, is what they have reported. NMDC has reduced iron ore prices by 300 per ton. Lump ore prices at 4,650, while fines have come down to 3,910. It is after China slowdown fears that we have seen international prices correcting. Hyundai has signed a deal to acquire General Motors Telagon manufacturing plant, which has an annual capacity of almost 130,000 units.
So the production will start by 2025. They have to remodel and redo the facility to suit Hyundai. So Hyundai already has a facility in Chennai, Sri Bermudur. So the Talegaon facility will give them a boost in their capacity, and the deal amount has not been mentioned. So no, and now, in spite of market being volatile, there are many stocks and sectors which are outperforming the market, and we need to understand there is a China factor which will impact, to an extent, few sectors and stock, but there are few sectors and stock which are benefiting from the problem in China. Yesterday, I saw Arvind making 4 years high. So there are a lot of stocks and sectors which are moving. So one has to be very stock specific to make money in this market. With that, over to you, team. गुड मॉर्निंग। एक बार अपने कॉल को हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं डाबर के न्यूज के साथ। जो डाबर में हमने कल देखा कि उन्होंने 7.5% से स्टेक बढ़ाया है, जो हालांकि उनके जो ऑलरेडी 40% का स्टेक रेलीगैर में है, तो इसके कल के 7.5% के स्टेक के चलते हुए उनका अभी जो स्टेक है 21.5% करीब आया है। तो हमें लगता है कि जो डाबर फैमिली ने जो रेलीगैर में जो किया है, ये इन्वेस्टमेंट के नजरिए से किया है, ऐसे हमें लगता है। कल हमने देखा कि डिफेंस में काफी सारे ये स्टॉक्स थे जो शिपिंग को रिलेटेड थे, उसमें काफी सारे मोमेंटम देखने को मिला था, जिसमें से जीएआरसी में हमने देखा कि उसके ऑलरेडी ऑर्डर को 24,000 करोड़ और 456 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी 750 करोड़ की वन FY24 में कंप्लीट किया है। और तीन तीन और ऐसे प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी पाइपलाइन में, जो करीब करीब 4,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। बसगांव डॉक पे भी अपडेट था कि यूरोप में उनको कोई ऑर्डर मिल सकते हैं। इसी के चलते हमें लगता है कि जो सेगमेंट के जो स्टॉक्स है, जैसे कि जीआईसी, मसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इसमें मोमेंटम हमको कंटिन्यूशन में देखने को मिल सकता है। यूएस एफडीए के ऊपर अपडेट है, उनका एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका इन्फ्लेशन फिलहाल अभी भी इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी है। उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का रिस्क रहेगा, तो इसके चलते उन्हें लगता है कि उनको हायर इंटरेस्ट रेट मेंटेन लेके ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो अपडेट है वो है एरोस्पेस के ऊपर। इंडियन आर्मी एरोस्पेस के ऊपर, जहाँ पे इंडियन आर्मी को अपाची चॉपर, इसके प्रोडक्शंस के रिलेटेड अपडेट है। तो ये मेजर बोइंग स्टार्ट करेंगे, वो एक अपडेट है। उसके बाद हुंडई के साथ एक न्यूज है, जहाँ पे उसने ये डील एक्वायर किया जनरल मोटर के साथ, जो कि तलेगांव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होगा। वो एक देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। रेलवे इंडस्ट्रीज के ऊपर एक अपडेट है। कल कैबिनेट ने एक अप्रूव किया है 32,500 करोड़ का, जो कि 7 प्रोजेक्ट्स होंगे रेलवे सेक्टर में। ये रेलवे स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। ये स्टॉक्स जैसे कि RVNL, इरकॉन, राइट्स, ऐसे कुछ स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये सेक्टर के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज रहेगा। तो इसके आगे ये जो इनिशिएटिव्स लिया गया है, ये अक्रॉस द 35 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, तो जो कि कुछ कुछ स्टेट्स आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये अक्रॉस ये प्रोजेक्ट्स होंगे। अगला एक अपडेट है ऑरोबिंदो फार्मा के ऊपर। तो कंपनी ने लॉन्च किया HIV ट्रिपल कॉम्बिनेशन ड्रग, जो कि ये बच्चों के लिए है, तो जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होगा। तो ये जो लॉन्च करेंगे वॉलंटरी लाइसेंस PV हेल्थ केयर के अंडर होगा। ये जो भी अपडेट है ये पॉजिटिव रहेगा ऑरो फार्मा के लिए। सिप्ला के ऊपर अपडेट है कि सिप्ला के जो जॉइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट कमिश्नर है, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया सस्पेंशन ऑफ FDA लाइसेंस टू द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग। वो पातालगंगा यूनिट के लिए होगा अगले 10 दिनों के लिए, इन दिसंबर 2023।
ये हालांकि रहेगा नॉन कंफॉर्मेंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली ये इससे कोई उनके फाइनेंशियल्स पे तो नहीं फर्क गिरेगा। तो ये टाइमिंग के लिए ये न्यूज़ के चलते शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट देन टेम्पररी इफेक्ट देखने को मिल सकता है सिप्ला में। पावर ग्रिड के ऊपर एक अपडेट है। कंपनी को नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक स्कीम 5 के अंडर ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि ऑपरेशनल होगा अगस्त 16 से, जो कि एक अगेन पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। इंडियन बैंक के सेक्टर्स के ऊपर एक अपडेट है। फिच रेटिंग जो एजेंसी है, उन्होंने इंडियन बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर एक अपडेट दिया है कि इन्होंने अपने बुक्स को काफी क्लीन किया है, बैलेंस शीट्स को क्लीन किया है। जो इनके जो कैपिटल रेशियो है वो 10.4% जो कि हुआ करता था 2018 में, वो अभी 13.4% के करीब देखने को मिला है 2023 के फिजिकल ईयर के एंडिंग में। तो हमारा ये मानना है कि इंडियन बैंक्स के अर्निंग्स काफी हेल्दी रहेंगे। इसमें जो कुछ स्टॉक्स जो हम फंडामेंटली पिक कर रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक। इसके अलावा मार्केट के बारे में भी को बात कर लेते हैं। मार्केट में हमने देखा कि लास्ट 2 दिन से मार्केट 19,200 के लेवल को, कल भी 19,200 के लेवल से एक बाउंस देखा मार्केट में। गैप डाउन होने के बाद भी जिस हिसाब से एक उछाल देखने को मिला, तो हमें लगता है एक थोड़ा सा जो रिसेंटली जो करेक्शंस आए थे मार्केट, उसका हम पुल बैक देख रहे हैं। ये जो अगर अगर हम देखते हैं तो लास्ट 4 महीने से हमने कंटिन्यूस रैली देखा था। तो ये जो मंथ हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली ब्रीदर है। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी के चलते हुए, बैंक निफ्टी ने जब 44,500 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद बैंक निफ्टी में एक मंदी का माहौल देखने को मिला था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक या 2 दिन आज एक्सपायरी के चलते हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट ले रहा है 19,500 के आसपास। शायद निफ्टी एक्सपैंड कर जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर बाय एनी चांस अगर 19,200 का लेवल निफ्टी ब्रेक करता है, तो हमें लगता है कि और थोड़ा मंदी फ्रेश मंदी आ सकता है मार्केट में। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लेके चलेंगे। बाकी और चाइना, जैसे कि कल भी हमने बताया कि चाइना में थोड़ा सा प्रॉब्लम चला है, बैंकिंग और रियल एस्टेट में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो उनके चलते वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी स्लाइटली दिखाई दे सकता है। तो हम फिलहाल तो कॉशियस व्यू लेके ही चल रहे हैं। 1 या 2 दिन के हिसाब से हम ट्रेडिंग बाउंस देख सकते हैं, और डायरेक्शनली अभी भी हमें थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके चलना है। So that's the update from our side. Thank you for attending the morning con call. Thank you.